फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट लाइव। जय हिंद, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आज भी लगता है भारत का परचम लहराएगा और फिर भारत सीधा फाइनल में अपनी जगह बनाएगा। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर, लेडीज एंड जेंटलमैन। टॉस का बॉस रोहित शर्मा है। दैट्स व्हाट इज द स्टोरी। लेट्स गो टू टॉस, लेट्स गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट and our friends, cricket crazy friends, and quickly get their thoughts on this. Sahil Malhotra is with us, Toss Rizvi is with us. Toss का boss तो रोहित शर्मा हो गए, but the bigger question is India is batting first, but more importantly, Akshar Patel comes in as the third spinner. But on the face of it, it's largely an unchanged side, and the person who is replacing Akshar is replacing Shardul Thakur. So that means Bumrah plays, Siraj plays, Kuldeep Sharma plays, Ravindra Jadeja plays, and Akshar Patel comes in place of Shardul Thakur. So there is no Mohammad Shami coming in. There is no rest being given to Bumrah, etc. Chaitanya Nanda भी आ गए हैं. What do you think about this? धूप निकल के आ गई है. कहा जा रहा है शाम को बारिश हो सकती है. दोनों कैप्टन का कहना था टॉस जीतते तो हम बल्लेबाजी करते. It's a dry wicket, but unchanged side, no rest being given to anybody. That's what it is. So we still don't have Shreyas Iyer back in the mix. That means his back spasm is a little serious one. They want to rest it out. And there is no rest for Bumrah either. Bumrah ने कल 5 ही ओवर डाले थे. ज़्यादा उनकी bowlers का वर्कआउट नहीं हुआ था. Toss, what do you think? नहीं, आई थिंक ये मूव तो था ही ऑब्वियसली कि भाई सेम विनिंग साइड जाएगी। हाँ, अक्षर पटेल को ले आए, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है ये, क्योंकि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिला रहे हैं आप और साथ में कुलदीप यादव को भी खिला रहे हैं। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। और क्या सोच रहे हैं रोहित शर्मा, वो बात रहेगी। या तो वो एक्सपेक्ट करें कि विकेट आज पूरे दिन बारिश नहीं होगी और विकेट थोड़ा ड्राई रहेगा और स्पिनर्स को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करेगा, और साथ साथ नीचे वो शायद अपनी अक्षर की बैटिंग जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं नीचे किस तरह से। अगर खुदा ना खास्ता कोलैप्स हो गया, सडन कोलैप्स हुआ, तो यहाँ पर नीचे अक्सर कैसे रिस्पॉन्ड करते सिचुएशन को या कैसे फिनिश करना चाहते हैं गेम को। क्योंकि शार्दुल, आई थिंक ही वाजंट बैड दैट एट ऑल। मतलब उन्होंने विकेट्स भी निकाली कल, एक अच्छी विकेट भी निकाली कुशल, और विकेट the total was too good, too big for Pakistan to chase, but still Shardul was good enough and उनको बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है इतना। तो आई थिंक, आई मीन, टीम तो एकदम विनिंग उतारना ही था, बट देन इट विल बी टेस्टिंग फॉर दीज प्लेयर्स टू वेदर दे कैन रिपीट द परफॉर्मेंस। केएल राहुल क्या वही इंटेंसिटी से खेलेंगे? मतलब 2 दिन आप रोहित शर्मा पहले दिन बल्लेबाजी किए, फिर दूसरे दिन फील्डिंग भी किए। विराट कोहली, आई मीन, प्रेशर, साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रेशर और हाई इंटेंसिटी गेम के बाद रिपीट करेंगे श्रीलंका के सामने। एंड श्रीलंका 13 मैच विनिंग स्ट्रीक है भाई अभी। उनको एक और ये है कि अब उनका जगह नॉट स्टॉप करना है आपको। तो क्या ये स्टॉप कर पाएंगे? बहुत सारे फैक्टर्स है, ये मैच को इंटरेस्टिंग बनाता है। और बल्लेबाजी करने का फैसला, बैटिंग करने का फैसला मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि ड्राई वेदर है, शाम में कंडीशन स्विंगिंग होगी, तो इनके पास पतिराना है भाई, हम सब जानते हैं पतिराना। Not much separates between these two, especially when you play in Sri Lanka. India just has a 2-match edge out of 64 matches that have been played, 31 by India. That's where it is. 6 matches with no result. Let's hope that we have a result-based game today. K. Srinivas Rao is with us. जो भी जीतेगा वो फाइनल में अपनी जगह बना लेगा। चैतन्य नंदा, देखिए टीम में ज्यादा फेरबदल नहीं, यानी कि सब फिट फाट हैं भाई। जो कंडीशन को देख के उन्होंने चेंज किया, और वो भी शार्दुल को चेंज किया, अक्षर को लेके आए हैं जी। I think the way KL Rahul batted and kept, it showed that he is completely fit now. जैसे मैंने बोला था कल वाले शो में कि उनको फ्रंट फुट पे नहीं खिलाया, but yesterday he was sweeping, he was playing shots from the front foot, he was stepping out, he was running hard in the wickets. That's the most important. कि 4 रन बनाए, उसके बाद विराट कोहली के साथ उन्होंने जबरदस्त रनिंग करी, फिर आके कीपिंग करी. So it proved that he is completely fit now. That's a good sign. The way Bumrah bowled, it was awesome. और आज जो चेंज किया शार्दुल को, आई थिंक टफ कॉल। शार्दुल ने अच्छा बॉल डाला, बट येस, आई थिंक अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन विकेट्स, बेटर टू हैव मोर स्पिनर्स, बिकॉज एज वी हैव सीन कैसे कुलदीप ने विकेट का फायदा उठाया. सो आई थिंक गुड डिसीजन, राइट चॉइस, एंड द वे नाउ द टीम इज शेपिंग अप एंड द वे दे आर गोइंग, आई थिंक दे आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन नाउ. एंड यू सी सडनली कितनी जल्दी चेंजेस आते हैं क्रिकेट के अंदर आज के टाइम में. अगर आज श्रेयस अय्यर भी फिट हो जाते तो हम हो सकते ये भी बात कर रहे होते केएल राहुल की इनिंग के बाद
कि शायद ईशान can be sit out, can be benched now. हाँ. So see how quickly the things changes in today's world. It's surprising. No, not just that. See, point is, why was there speculation about KL Rahul? Because you had not seen whether he was going to be able to deliver. Also, that before he got the injury, he was struggling. He was not struggling because of his form. He was struggling because there was some problem between in the space between the ears, and there it seemed more mental than anything else. And he was not just able to get there and get something was off. Now he seems to it that through his injury and recovery period, he seems to have sorted that out, and it's good that he's got runs under the belt. Nobody was ever questioned the capability of KL Rahul. Everybody looked at the on form. On form, you'd always want to back a player who's got form. And as a keeper, I was surprised that yesterday KL Rahul was keeping, whereas Ishan Kishan technically is a better keeper than KL Rahul. Maybe he was trying to prove a point कि मैं पूरी तरह fit हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैटिंग कर सकता हूँ, मैं कीपिंग कर सकता हूँ. Maybe today we may see Ishan Kishan keep wickets today. Shrini, what's the news? Well, wicket has to be kept. If Ishan is in the squad, every single time that he walks out, he has to keep the wicket. Because between the two of them, obviously he's the regular wicket keeper. He's a better wicket keeper also. But कल नहीं किया So, था. sorry. कल नहीं किया था. कल No, KL लोकेश राहुल did. हाँ. Yeah, I'm saying that if you're giving a guy like you're making a point in terms of proving up. Yesterday, I thought it was about KL making a comeback. Yeah. Kind of proving his fitness. I said when you kind of going into a tournament when it begins to matter, I think KL Ishan Kishan, if he plays, he happens to be your first choice wicket keeper. That should not change. Rather, I mean, there's no saying with this team management, but that should not change. Now, as far as अक्सर आई थिंक इफ दे आर जस्ट ट्राइंग टुडे देन मुझे लगता है कि बुमराह को अगर अगर आपका एक्सपेरिमेंट ही आपका एक मोटिव था तो या शार्दुल को बिठा के आप अक्सर को खिला रहे हो. इवेंचुअली जो 11 वर्ल्ड कप में खेलेगा, मुझे आई डाउट कि दोनों अक्सर और जडेजा खेलने वाले हैं इन द सिंगल 11. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो इफ यू वांट टू ट्राई आउट अक्सर, नाउ इज अ गुड चांस to try and kind of see what kind of combinations you have. The earlier you try, the better it is, because you get to know that have you done the right thing by going with 3 left arm spinners. Because to me as an outsider, it's still a point that rankles. It's still kind of, and especially I mean yesterday the way Kuldeep bowled, so now it is bit like Aksar, because again brings the same skill set as Jadeja. So what different option that he's getting to the 11? I have not been able to understand. I really can't get it. I think they are good tandem bowlers. They tend to get one, एक चलता है तो दूसरा नहीं चलता है, एक नहीं चलता, तो ये इनका दोनों का रवि जडेजा और हमने अक्षर का ये देखा है. इसमें I just want to go through what KL Rahul had said soon after that 100 post match. उसने जो कहा है, when I walked in, I had that initial nervousness. It took me 10-15 balls just to calm myself down and get my feet moving, get my mind thinking of the right things. Then when I hit 1 or 2 boundaries, all those things, the fogginess in your clarity went away and it became like before. तो बंदे के दिमाग में भी था ना नर्वसनेस. यार सब इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है. आप चाहे जितना भी अपने आप को स्टील कर लो, यू नीड द रब ऑफ द ग्रीन. आई थिंक मोर देन इंडिया और मोर देन फैंस, he himself needed that 100 and getting that knock. He may not have got that 100. Had he got that 60 odd, 70 odd, also it would have given him enough confidence. But Sahil, is this also a message saying that nobody is getting any more rest anymore? Rohit today said कि भाई everybody will have to adapt. Conditions ऐसे होंगे, कभी ऐसा होगा. I think it's a fair call. If your body allows you to play consecutive games, so be it. Because there are people there who know what the players are going through. Workload management का भी ध्यान रखा जा रहा है, and especially with what is happening with Shreyas now, because these are like scary signals now. अगर आप अहमदाबाद टेस्ट भी याद करेंगे, this is exactly what happened with Shreyas. He was having a hit in the nets and he did not come out to bat because that back spasm triggered and he was out of action for so long. So I hope it is not that bad. But then again, as we are reading that update on Shreyas Iyer, he hasn't traveled with the team. He wasn't spotted in the dugout yesterday also. So I'm just worried for Shreyas. But other than that, I think all players looked in tremendous shape yesterday. Of KL Rahul again making a statement, keeping for the entire game, then batting for as long as he did, running hard with Virat Kohli, because those conditions were difficult to bat. It was hot, it was humid, and it's not easy to run with someone like a Virat Kohli, क्योंकि उसको तो बाहर जाते ही सारे डबल दिखते हैं. But he gave a good account of his fitness. Yeah, but एक बात बताओ चैतन्य, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, and toss also weighing on this. ये back spasm जो है,
See, Sachin also struggled with this back spasm. What triggers this? This is age driven? Is it because you're moving your body in an awkward position? Or is it something else? Is it driven by diet and nutrition, or a sudden drop in perhaps your vitamin D, vitamin B12 levels? How does this work? It's basic. It's basically what happens when you some muscle get into a wrong tendon. Then there's a liquid comes and try to save that place, and there that comes the spasms comes in. So it Hmm. can be due to many factors. It can be due to bad positioning of your body, due to some niggle, or due to while playing you twisted something, or you might have turned wrong. You might have not slept well. It could be tiredness. It could be uh, multivitamin deficiency. It can be from anything. So basically, Hmm. spasm is just trying to protect the area which is Hmm. not completely fit in your Hmm. body right now. Hmm. So I think it cannot be a bigger issue because he has come back from an injury. They're taking it lightly, and he might be doing the training of conditioning training. He might have touched the ground or might have turned in a wrong way. That's why he might have reflected it again, and the spasm came back. Toss? I mean, देखिए अभी the most important part here is like spasm. अभी आप देखिए explain करेंगे तो it's about like you've been frequently playing matches, and then I mean you coming back from rest, अच्छा खासा जी रेस्ट किए आप, उसके बाद आप कम बैक कर रहे हैं सडनली कुछ कैच, जैसे चैतन्य भाई ने बोला कि आई मीन कहीं पर भी कैच कर सकते हैं आप, नेक्स्ट सेशन में होंगे, अब एक जरा सा रॉन्ग मूव या जरा सा ट्विस्ट इन द शोल्डर, और आई मीन आई एम सरप्राइज कंसिडरिंग दीज पीपल आर फिट, और जब आप विटामिन डेफिशिएंसी या प्रोटीन्स की बात करते हैं ये सब के सब इनके बॉडी में जाता ही होगा, या तो फिटनेस लेवल्स भी हाई हैं इनके, या आप देखेंगे नेट सेशन में भी दीज गाइज आर स्ट्रॉन्ग पीपल आउट देयर, तो यहाँ पर अचानक आना दिस इज सरप्राइजिंग, और मे बी अ बैड लक coming in suddenly, because spasm is not a serious big injury, chetan bhai, if I'm not wrong, it's not like आप recover जल्दी कर सकते हो इससे, it's not a huge deal, और ऐसा नहीं कि आपको रूल आउट कर देगा पूरा, एक जैसे लास्ट इंजरी हुई थी श्रेयस अय्यर को, नी इंजरी जिसकी वजह से पूरा रूल आउट हो गया था, इतना लंबा If they गैप में गया yes, था, or बट दिस if इज they ask him to play again in spasm, then it can be a dangerous thing. Or if he's हाँ not completely fit and if they put him in again, then it will be a serious matter. If they या can कैन give him rest, aggravate, yeah. it can aggravate, ओके so that is आज के मैच के बारे में क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है One मैच एक्शन thing बहुत here, जल्दी Anand, स्टार्ट हो। हाँ जी, हाँ बोलो। you know, एक चीज तो मेरे को मोटा मोटा क्लियर लग रहा है between शार्दुल and अक्षर, depending on conditions, doesn't matter how Rohit wants to go about. But हम्म between Shardul and Aksar is the only trick. Otherwise, what you are possibly looking at is the combination that you're going to see at on a very regular basis. हम्म This combination, barring Aksar coming in for Shardul or Shardul coming in for Aksar, depending on how Rohit and Rahul want to go about, I think what you're looking at is this combination. This combination is not changing but I So think it's mostly also it could be because this is like the giving only him some kind combination of that allows you match eight match batsmen. time match time to Akshar Patel, who has not been given like a long time. He's been there, but not given that kind of opportunity. So that at least he'll be there in the group, some kind of group action में या scheme of thing में आप adapt कैसे करेंगे situation को, और ये combination में जैसे श्रीनी भाई ने बोला कि कैसे combination में set करेंगे आप, because I don't find it like there is no sense playing similar kind of spinners, similar kind of batsmen, आपको बैटिंग भी नहीं आएगी, अगर कोलैप्स हुआ तो ही आएगी बैटिंग, बॉलिंग भी आप देखिए कल शादाब खान दो स्ट्रगल कर रहे थे, पाकिस्तानी स्पिनर्स वो स्ट्रगलिंग, यहाँ पर ओनली कुलदीप एंड जडेजा वर, तो मतलब आज से हिंट मिला होगा कल के मैच से कि भाई ओनली आर स्पिनर्स कैन डोमिनेट, अदर्स कैन नॉट है यहाँ पर, एंड श्रीलंका हैव मोस्टली राइट हैंडर्स एज वेल। करेक्ट। नहीं, एक और चीज मैंने देखी कि दिस सडनली आल्सो व्हेन यू स्वैप अ शार्दुल फॉर अक्षर पटेल, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर बैटिंग डेप्थ. So that is also something which you are saying. You still have three pacers and you have three spinners. So you've got Hardik in the all-rounder, you've got Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj. तो तीन पेसर आपके पास वहाँ हैं, और फिर आपके पास तीन स्पिन ऑप्शंस आपके पास हैं, कुलदीप, अक्षर और रविंद्र जडेजा. तो 6 बॉलर तो हैं आपके पास 50 ओवर निकालने के लिए, और कंडीशन जैसा भी होगा वैसे आप अडेप्ट कर सकते हैं. और 6 बॉलर लेकिन आपको मिनिमम चाहिए. हाँ, 6 तो आपको मिनिमम चाहिए, वो तो मुझे लग रहा है. Actually, बट आई एम हैप्पी दैट समवन लाइक बुमराह हैज नॉट सेड कि मुझे रेस्ट चाहिए. कल 5 ओवर में 18 रन दिए, ही वाज लुकिंग वेरी शार्प.
but he was also bowling within himself. He is not trying to really unleash himself. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी वो 5 या 6 ओवर ही डालेंगे, उससे ज़्यादा डालेंगे नहीं। और धीरे धीरे अपने आप को फुल रिदम में ईज इन करने का, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं पे भी आपको लगा कि ये ही वाज लुकिंग अनकंफर्टेबल। एनी ऑफ द थ्री प्लेयर्स, आई थिंक एनी ऑफ द टू प्लेयर्स between KL Rahul and Jasprit Bumrah, did you ever get a sense that they were not 100% there? Somehow I was happy to see KL Rahul keep, although I was surprised, but I was happy to see him keep. He still has some of those issues that he sits too late to get in position to before the ball is delivered, and he doesn't sit too much. रजत जोशी बोल रहे हैं विराट कोहली को रेस्ट करना चाहिए था। वो रेस्ट नहीं करेगा। मोमेंटम अभी मिला है, अभी तो शुरू पे किया है। अभी तो रन लग रहे हैं, अब नहीं छोड़ेगा। और इन हाँ। सब में से कोई एक है जो सुबह उठ के फिर भी दौड़ लगा के आया होगा और कुछ करके आया होगा, वो विराट कोहली है। In the sense कि I think Anand, abhi you mentioned about fitness. I noticed this very little thing during the game yesterday when Bumrah had bowled 4 overs full steam. He was running in hard. Rohit had asked him whether you are okay bowling the 5th over. तो उसने 5 over on the trot डाला. I think Bumrah is pretty much sorted, and that was the biggest worry. Bumrah is pretty much sorted. अच्छे rhythm में लग रहा था, and the way he got the wicket, I think that was a beautiful delivery. Understanding his things, coming around the wicket to the left-hander, that late swing working in his favor. I think it was a beautiful spell. 5 tight overs, good overs. नहीं, और इसमें कल विराट कोहली ने 9 चौके और 1 छक्का मारा है, ठीक है, यानी 42 रन उसके 122 में से उसने बाउंड्रीज में निकाले हैं, बाकी सब दौड़ के निकाले हैं भाई। उस वो बंदे की 50 तो दौड़ के बना देता है। He Correct. reaches 15 ODIs like with a couple of boundaries. कल का जो वो केएल के साथ खेल रहा था, when KL already had that 1 6 and 3 4, by that time this guy was just dealing in singles and doubles. I mean, ये सिर्फ दौड़ ही रहा था। ये कोहली कह रहा है, I was pushing for those runs and happy for it, but I was thinking I need to play at 3 p.m. tomorrow. Luckily we are test players. I've played over 100 tests, so I know how to come back and play the next day. It was really humid out there. I'm 35 in November, so I need to be taking care of that recovery as well. ये कोहली ने हंसते हुए कल कहा है। But also I was intentionally scrolling Instagram this morning. I just wanted to see कि वो KL Rahul का shot has become a viral reel, but unfortunately it has not. That 6 of Shadab Khan, I think that was shot of the year for me. Virat वाला तो था ही, which he played against Harris Rauf in the last World Cup, but that वो leg spinner को mid wicket के ऊपर चल के मारना, वो अलग तरीके का, that was a ridiculous shot. That was shot of a man riding very high on confidence. पता है where I'm just saying as a fan, when I saw Virat Kohli walking 3 steps out onto the off stump and then just open the face of the bat to deflect that ball, because उसको मालूम है बाहर कराएगा, वो ball reflect करा के he got it between slip and the keeper got it for a boundary. वहाँ मुझे ऐसा लगा कि भाई आदमी चल गया, अब इसको रन आउट करा सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा तो फिर इसका ये चल गया। यही मुझे आईपीएल में, वो मैं कह रहा हूँ ना, सुपर ओवर में मुझे लगा था जब उसका टच वाज गॉन एंड ही एंड डिविलियर्स केम आउट और वो एक बॉल उसका कनेक्ट हुआ और उसके बाद उसने पूरे सीजन में इतने रन बनाए, बिकॉज वो चल गया उसका। आपको देख के कुछ प्लेयर्स का लगता है चल गया। सचिन तेंदुलकर का मालूम है आपका क्लासिक वो बैकफुट पंच जो है, ड्राइव जैसी आ गया और पहले ओवर में अगर वो आ गया, पहले 10 बॉल में आ गया, तो मालूम है कि भाई आज मास्टर रन बनाने वाला है। तो these are certain trademarks of certain players जो आपको पता है कि भाई इसका चलने लग गया। आज के मैच में आपको क्या लग रहा है? अभी तो इंडिया की बैटिंग है, कितनी उम्मीद है कल के 358 के बाद, 356 के बाद? चैतन्य? I think it will be around 300, 310-20, because Sri Lanka knows how to play in their own ground and they have spinners as well. बट मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, जो शार्दुल ठाकुर को आज रिप्लेस करने की हिम्मत मिली है वो बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या स्पेल. The way he bowled, he has given the confidence to the captain. Yes, we can sustain him, we can depend on him for next 5 overs. So जब आपके players perform करते हैं ना, then you get this habit of coming out and expressing yourself as a captain also. I think now Rohit feels like that, he can express with this team. So I think that continues. This form should continue and they should not stop any players quickly, because जो इंडिया का रियल टेस्ट होगा ना, वो होगा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगी. बिकॉज आई टोल्ड यू यस्टरडे, वी हैव नॉट सीन पाकिस्तान जब तक प्रेशर में आती है वो कैसे बिहेव करती है, क्योंकि वो बिखर जाते हैं, उनको वापस जोड़ना नहीं आता. एंड दैट व्हाट वी हैव सीन इन दिस मैच, कि जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, उसके मेन बॉलर पे अटैक हुआ, देन दे डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट टू कम, एंड दैट सेम थिंग हैपेंड. 350
के लिए बनाना is not easy. They were lost before because if you see, the media, the legends, the ex-cricketers of Pakistan, they were themselves before the innings started saying, ठीक है यार 300 ही बना लो आप लोग. I have हाँ never seen this kind of a talk happening before the innings started. लोग कहते हैं नहीं हम भी बना देंगे 350, but वो खुद ही कह रहे हैं नहीं यार 300 ही बना देना वही बहुत है. So see, they हाँ don't have that confidence because they know in their team they only depending on two batsmen, which is Babar and Rizwan. बाकी रिजवान रोटेट करने वाले हैं उनके आसपास. So I think that's surprising. So I think लेकिन भाई साहब India जिस should तरह से keep continuing पाकिस्तान to टीम perform. को कल पाकिस्तानी फैंस ने ट्रोल किया है, वो अलग अलग लेवल का ट्रोलिंग किया है कल. So for me नहीं, today 310, 320. आज एक आपको लग मिथ रहा है भी कि बस्ट हो गया ना. एक हाँ पाकिस्तान का मिथ भी कि दैट दे वर द बेस्ट साइड, द मोस्ट बैलेंस साइड बिफोर द वर्ल्ड कप. दे आर सेट टू सेट द स्टेज ऑन फायर. दैट ऑल गॉट बस्टेड टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट. इंडिया ने बस्ट कर दिया. और हमारा इनफैक्ट हमारा तो कुछ था भी नहीं प्लान कि क्या केएल राहुल कम बैक करेगा, श्रेयस अय्यर का पोजीशन नहीं, जसप्रीत बुमराह, क्या होगा हमारे वर्ल्ड कप प्लान्स का. स्टार्ट हमने जो सेट किया है टोन एकदम राइट टाइम पे किया है. नहीं वो क्योंकि पहले मैच में 266 जिस तरह से बने ना, हमको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा खुद टीम है हमारी. फिर नेपाल के खिलाफ जो एटीट्यूड था, इट वाज सो डिसहार्टनिंग. But it just looks like they were all easing themselves out, up into and slowly increasing the ante and upping the ante and increasing the momentum and trying to get into their groove. There seems to be a plan as of now. Whether it will last, we'll have to wait and watch. I don't have very great hopes about the match today. I somehow feel that we will struggle to get to even 300 today. Somewhere I just get the feeling that today will be a leveler. कि भाई बहुत ज़्यादा expectation मत रखो, because yesterday should be treated as an aberration and not a norm. I know Srini will not agree with me. Srini? I mean, 5 years we waited for this top order to click in somewhere. How many times have you actually seen the top four get you a 50? Like there, I think दो या तीन बार हुआ है बस. So you have been hungry for this kind of a an outing, and when it's here, I want to make the most of it. I said, why not go and do another 350 plus? I mean, I like pick as many runs as you can, because what you need now is not kind of timing, this thing, talent, वगैरह. Now all of that is there. What you just need is that bit of mental confidence. Yes, just that KL Rahul quote which you Hmm. earlier talked Hmm. about. Clearing of the mind. I mean, that's what. Yeah, this one. So clearing of Hmm. the mind, what is needed, and I Yeah. think more the merrier should be the way to Yeah. go. And Fogginess in your clarity went away and it became like before. Very, very insightful this part. That if your mind is foggy, then you can screw it up. yeah, See, I'm just going to say we got 2 minutes more because the national anthem and the players are all out and the match action should get underway very soon. I just want to ask all of you guys, how many of you are confident that we will still have yet another 50 plus partnership? मैं तो 100 partnership भी नहीं बोल रहा हूँ, 50 plus opening partnership होगी. Toss, tell me, होगा होगा are you confident होगा. that we'll have a 50 plus opening partnership? होगा. Confident we should have, yeah, with the kind of tone we Rohit Sharma and Shubman Gill set in the other game, last game. I mean, अब इससे अच्छा और conditions. I mean, conditions are supporting you. There is the wicket is dry. It's going to help you. सूरज निकल आया है. There is it's sunny outside and there is no threat of rain or cloudy. At least breezy भी नहीं है. Humidity. आप थोड़ा बैटिंग अभी enjoy कर सकते हो जो आप बाद में शाम में नहीं कर सकते हो क्योंकि सी मूवमेंट ज्यादा होने लगेगा शाम में as sun sets in. But then this is the right time. और क्यों नहीं कर सकते यार? I think कर सकते और करना भी चाहिए. I mean, वो फ्लूक नहीं लगना चाहिए पिछला वाला नो पार्टनरशिप. पर They ये should देखो, be. रोहित शर्मा ने जो बोला है ना कि टॉस से 5 मिनट पहले केएल राहुल को पता लगा कि वो खेल रहा है और वो कह रहा है कि इट शोज द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर. नाउ दिस हैज गॉट मी थिंकिंग कि भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर माइंडसेट क्या था कि आपको नहीं पता था कि श्रेयस अय्यर को बैक स्पैज़म है, उसकी तबीयत, वो नहीं खेल सकता मैच. और No, it happened last minute, Anand. That's what KL said हाँ कल post match presentation में, that he wasn't even carrying his playing gear. उसके पास एक full sleeves का t-shirt था. So the manager had to rush back to the hotel to get his gear in order for the match. So it was very, very last moment. That's what quotes from Rohit and KL and the team तो, sheet scribbling तो, suggests. तो यानी शुक्र मनाओ कि ओपनिंग पार्टनरशिप 122 की थी कि केएल राहुल का सामान पहुंच गया होटल स्टेडियम.
हम इसीलिए हम्बन टोटा में नहीं खेले क्योंकि वो होटल बहुत दूर है ग्राउंड से। हाँ, इसीलिए हम देखो अगर Otherwise, it would have been possible. हम्बन टोटा गए होते तो रिजर्व डे होता, रिजर्व डे नहीं होता तो आपको ये बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिलता, ये थंपिंग विन देखने को मिलता। कोलंबो में है, पब्लिक आई है। This was all planned by BCCI from day one. But I feel it will be a good contest between Pathirana and our openers. हाँ। He's a good bowler. चलिए, let's Pathirana watch has the looked very contest. good. Yeah, मैच एक्शन he इज looked अबाउट टू very गेट good. अंडरवे। मिड इनिंग्स में मुलाकात होगी, फिर देखेंगे 300 पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि मूड कैसा है ठाकुर। तब तक के लिए ओके बॉय, सी यू बॉयज, सी। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।